इफ आई आस्क यू कि ये बताएं कि मुझे 5 रीजंस बताएं कि ये मार्कर क्यों अच्छा है, कैन यू डू दैट? यू कैन डू दैट ऑब्वियसली. एंड इफ आई आस्क यू कि 5 रीजंस बताएं कि ये मार्कर क्यों अच्छा नहीं है, तो कैन यू डू दैट? सो यू सी, ये वाली एबिलिटी जो है ना, ये रीजनिंग देने की एबिलिटी, ये हर इंसान को ऑटोमेटिकली मिली हुई है. हर बंदा ये रीजनिंग जनरेट कर सकता है. एवरी माइंड कैन डू दैट. Every human being can do that, and this is an instinctive ability that has been given to us all. जो समझदारी है वो ये है that your ability to evaluation करने की सलाहियत, गलत और सही के दरमियान फर्क करने की सलाहियत. अच्छा, सिर्फ गलत और सही नहीं होता है. If I draw one side if it is good and the other side if it is bad, then what would be in the middle? That would be something. चलो, अगर मैं इसको एक और शेप देता हूं to make it easy. If this is white and if this is black, then what is it? What would this be? This is gray or AY or EY? EY. Okay. Then what would this be? Okay, then what would this be? And this, and this, and this, and this, and this. So there are not always the things which are right and wrong all the times. There are grays also. You see, हम लोग जो जिंदा रहते हैं, majority of us, 99% लोग या इधर होते हैं या इधर होते हैं. उनको दरमियान की उनको समझ ही नहीं होती, उनको सेंस ही नहीं होती. Most of the times they don't know. हम क्या करते हैं, या तो किसी बंदे को अच्छा बंदा कहते हैं या किसी को कहते हैं बुरा बंदा. मुझे बताओ, दुनिया में कोई एब्सोल्युटली अच्छा बंदा होता है? तो वी ऑल आर इन ग्रेज एंड एवरीवन इज इन ग्रेज. हम क्या करते हैं, वी ईदर थिंक समबडी इज अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन. हम ये ग्रेज और वाइट्स में एस्टैब्लिश करते हैं बस. इसके अलावा हम देखते कोई एब्सोल्युटली बुरा भी नहीं होता. एब्सोल्युटली बुरे बंदे के साथ क्या रवैया होना चाहिए? How should we behave with that kind of a person? You make people bad in your minds and then you choose your behaviors to be worse than them. That's what we do because this is instinctive. See, your knowledge tells you something else. एक तो आइंदा से ये समझ लें कि हर चीज एब्सोल्युटली गलत नहीं होती और हर चीज एब्सोल्युटली सही नहीं होती. Unless it is proven to be that way by, I think, मेरे लिए तो कुरान है. आप अपने एक्सपीरियंस को समझना चाहते हैं या आप किसी और चीज को मानना चाहते हैं, तो that is your choice. But what I'm trying to tell you is that it is the thinking. If you have your thoughts managed, a lot of things would go better for you. ये जो ADHD का इशू है, ये भी इसीलिए होता है. Your thoughts are not managed and your mind gets tired very quickly. ये जो बोरियत होती है, ये बेसिकली इसकी एक वजह ये भी होती है दैट यू आर थिंकिंग टू मच ऑल द टाइम्स. यू आर हैबिचुअल ऑफ थिंकिंग ऑल द टाइम्स एंड विदाउट डायरेक्शन. चूंकि उसमें कोई सिम्त नहीं होती, कोई फोकस नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता थिंकिंग का, जो आप सारा दिन करते रहते हैं. बस आप हैपहैजर्डली जो दिमाग में आ रहा है वो सोच रहे होते हैं. आप उसको कंट्रोल नहीं करते. यू डू नॉट कंट्रोल योर ओन माइंड्स टू स्टॉप एंड वेट एंड सी व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट सपोज. So you don't stop. अब इसमें दो तरह की, डॉक्टर एडवर्ड डे बोनो, who is one of the contemporary philosophers, out of contemporary philosophers, कि जिसने ये thinking techniques कुछ इजाद भी की हैं. He has, although उसने इजाद नहीं की हैं, those thinking techniques are already explained in Quran. But in the modern times, he is considered to be the pioneer of thinking techniques, kind of, Dr. Edward de Bono. Okay, now as I told you, he told the mind works. Can anyone explain? I told you the other day. Yes, it is self-maximizing system of the brain. How does the brain self-maximize? When the brain acquires any information, it gets stored in our mind in the shape of a memory.
So whenever anything relevant, any second information which is relevant to that first information comes, it automatically gets stored and attached with that previous information. बात समझ आ गई है? So that is how, for example, if I close your eyes and if I close your ears and bring a mango before your nose, will you be able to tell which fruit it is? Why? Because the memory of that smell is already stored in your mind. So then both the things will join together and suddenly you will say it's a mango. So this is how generally the mind works. ये उन लोगों का माइंड है जो इंस्टिंक्टिव वर्किंग है. ये ऑटो वर्किंग पे जब चलता है ब्रेन तो ये ऐसे ही चलता है. ये वो फॉर्मूला है. आप सारे चलते हैं इस पे. इफ दिस देन दैट, मतलब बकरा जो मारेगा बकरी को सींग तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग. इफ दिस देन दैट, कंप्यूटर में यही होता है एग्जैक्टली. समझ आई? क्योंकि लेड डाउन फिक्स्ड पाथ्स मौजूद है उसमें. ठीक है? सो यू सी, दिस इज द मोस्ट नॉन क्रिएटिव वे ऑफ लाइफ. ये सीधा सीधा बस जो आम चल रहा है और लोग समझ रहे होते हैं वो बड़े क्रिएटिव है. कॉज एंड इफेक्ट, इसको क्या कहा जाएगा? कॉज एंड इफेक्ट. वजह और उसके असरात. बिकॉज, वाई आर यू लेट? सर बिकॉज. कॉज एंड इफेक्ट. यू सी, ये लेटरल थिंकिंग है. बट सॉरी, ये वर्टिकल थिंकिंग है. दिस इज द कॉमन वे ऑफ थिंकिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल यूज. क्या ये यूजलेस है? नहीं, इट इज नॉट यूजलेस. इट इज ऑल्सो इफेक्टिव. इससे भी बहुत सारे काम लिए जाते हैं. बहुत सारे डिसीजंस हम अपनी जिंदगी के इसमें लेते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू चेंज, मैंने क्या बताया था? व्हाट इज द व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी व्हेन यू विल ग्रो अप? आप जब बड़े होंगे तो जाहिल उसको नहीं कहा जाएगा कि जिसके पास डिग्री नहीं होगी. जाहिल उसको कहा जाएगा जिसके अंदर चेंज होने की सलाहियत नहीं है. वो लोगों में चेंज होने की सलाहियत क्यों नहीं होती? Why do they not have that ability to change? Okay, because they have not learned to change. Fine. They don't want to change. Will to change नहीं है. ठीक है. Yeah, they don't self-analyze. Okay, this is one of the reasons. They do not admit that they need to change. They don't accept. मानते नहीं हैं. अपने लिए नहीं मानते. अंदाजा लगाए कितना बेवकूफ होता है इंसान. You know, be better every day. If you are not becoming better every day, you are not changing. You are stagnant water, dead water, जिसमें से बदबू आती है, जिसमें कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती, मुर्दार पानी. तो अपने आप को लिविंग वाटर किसको कहते हैं? बहता हुआ पानी. इसीलिए कहा गया ना, बहता हुआ पानी पाक होता है. वो इसीलिए कहा गया है. इससे एक और बात समझ आती है. इमेजिनेशन. अभी देखो ना, मैंने आप लोगों के सामने एक तस्वीर घड़ी ना, आप लोगों को तस्वीर नजर आई, आपने कहा यू सी, इमेजिनेशन इज अ पावरफुल थिंग. इमेजिन योर सेल्फ चेंजिंग. इमेजिन योर सेल्फ चेंजिंग. अपने आप को चेंज विजुअलाइज करनी चाहिए. तसव्वुर में अपनी चेंज विजुअलाइज करनी चाहिए. आई एम चेंजिंग फॉर बेटर. वॉट इज दैट बेटर इन मी? चेंज योर इनर सेल्फ फॉर बेटर. अब आ जाते हैं हम चेंज वाली साइड पे. लेटरल थिंकिंग इज दैट टूल विच इज सपोज टू ब्रिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन योर सेल्फ. अभी जो लोग सारी जिंदगी वर्टिकल थिंकिंग पे चलते रहते हैं ना, जिन्होंने सारी जिंदगी ये जस्टिफिकेशंस देकर जिंदगी गुजारी होती है, दे गेट फिल्ड विद देमसेल्व्स ग्रेजुअली आफ्टर 40, खास तौर पे. नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ lateral thinking that I am going to teach today is pending output. First thing that we are learning today is pending output. So you can call it PO.
PO, pending output, PO. Why I'm saying this short version is self maximizing system of brain. ठीक होता क्या है, एक इंफॉर्मेशन आ गई, वो स्टैक हो गई. लेटरल थिंक, ये वर्टिकल सिस्टम तो यही है, ऐसी है ना. जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो पिछली इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ती जा रही है. बट दोज हु स्टार्ट लर्निंग दिस, वो क्या करते हैं, वो आने वाली इंफॉर्मेशन के ऊपर डिसीजंस नहीं देते. वो क्या करते हैं, पेंडिंग मीन्स दे डिले द आउटपुट. वो जो उस पर रिएक्शन है ना, वो फाइनल डिसीजन नहीं बनाते, या उसको आप कह लें वो सब्र करते हैं. समझ आई बात की. या वो बात को फाइनली नहीं अपने ज़हन में फाइनल कर लेते, नहीं एनजी है वो क्या, व्हाई डू दे डू दैट, एंड हाउ वुड दे बिकम मोर एक्यूरेट, by gaining more information on that. ठीक है. So they do not decide things quickly, ऐसे एकदम नहीं. So how would they gain more information? What is the key to knowledge? What is the key to knowledge? Question. Who said that? Question is the key to knowledge. So what they do is, when they are, how do they build more information? Ask question, seek knowledge. ठीक है. वो मजीद इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं कि यार ऐसे नहीं, एक इंफॉर्मेशन पे मैं डिसीजन कैसे लूंगा, लेट्स हैव. सो दे वेट एंड सी, दे डोंट फाइनलाइज. तो क्या होता है कि वो जो ब्रेन का जो मैक्सिमाइजिंग सिस्टम है, वो अब ऑटो नहीं रहता. पहले तो ऑटोमेटिकली जा रही थी ना, अब वो वर्टिकल वाले क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, हार्ड लाइनर्स, प्रेजुडिस्ड. वो क्योंकि रोकते ही नहीं किसी बात को, वो क्वेश्चन नहीं करते. तो क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन गहरी हो जाती है, मैंने आपको बाउल में बताया था, आहिस्ता, व्हेन इट बिकम्स डीप इनग्राइंड इन यू, इट बिकम्स अ प्रेजुडिस, इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग हार्ड इंफॉर्मेशन, सो मच सो दैट सम पीपल बिकम इमोशनल ऑन दैट. अगर उनकी इंफॉर्मेशन से कंट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन आ जाए किसी और की, तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है. So the first thing to learn is that whenever anyone gives you the information about anything which you already know a little bit, do not decide quickly. Wait, get more information, and then make up your mind based on information, not just a hunch. You know what's a hunch? Hunch is an unconfirmed information. In fact, hunchy people are most ill-informed. Some people consider it intuition. कुछ लोग इसको समझते हैं ये intuition है. It is not intuition at all. मतलब कुछ कहते हैं जी हमें जो है ना सानू पता लग जाता है. वो पता को नहीं लग जाता. वो actually what you are doing is that वो आपके अंदर information पहले से stored होती है, वो उससे जाके दूसरी information जुड़ जाती है, and you make up your mind very quickly. Don't make up your mind so quickly without asking questions, without seeking knowledge, without increasing information, without reaching to the conclusion through information consciously. इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉन्शियसली. खुद करना है, ये जानबूझ के खुद करेंगे तो होगा, बट अदरवाइज यू विल रिमेन दिस थ्रू आउट योर लाइफ. आप हमेशा सारी जिंदगी वर्टिकल थिंकिंग प्रोसेस पे चलते रहेंगे. वही जो सारे हैं, आप भी वही होंगे, बात पे नाराज, बात पे झगड़े, अपनी बात को फाइनल समझना, दूसरे की बात को वैल्यू ना देना. बट व्हेन यू बिकम दिस, यू चेंज, योर माइंडसेट चेंजेस, देन यू चेंज एवरीथिंग. इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं आप. तो अब पता चला जाहिल क्यों कह रहा था मैं. दोज हु आर नॉट ऑन दिस साइड, that is why they are ignorant, because they do not probe, they do not prod, they do not dig, they do not try to know. So this is the first part of lateral thinking that I have taught you today.